Good morning, good afternoon, good evening, good night, viewers, children, students, or even parents. Whosoever is listening me, whensoever, wheresoever listening. Namaskar. Jai Hind. Uh, Children, I was talking to you about the last lesson, and I just read 2 or 3 pages in the last lecture where I said friends. Of course, he was in the great dread of going to the school because he hadn't learned his lesson on participles and he was also late. And then there was a charming weather, warm. There were Prussian soldiers drilling, and then the birds chirping, the sawmill. All these were much tempting than the school classroom. But then he resisted all the temptation and hurried on to the school. On the way, he found the bulletin board. There were a lot of people who were standing there. बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे. क्राउड था, भीड़ थी. और जितने भी मनहूस खबरें अब बैटल के बारे में, क्योंकि वॉर टॉन कंट्री है, वॉर चल रहा था, तो काफ़ी सारी मनहूस खबरें आती थी और उस पर लिखी जाती थी. लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्टिंग ऑर्डर्स, कमांडिंग ऑफ द ऑफिसर, ये सब चीज़ें उस पर लिखी जाती थी. और अब की बार भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो भीड़ किस लिए है, क्योंकि जल्दी में था तो उसने वहाँ पे वो रुका नहीं. एंड देन ही इज़ बीइंग कमेंटेड देयर बाय द watcher, a blacksmith who was there with his apprentice, and he says that there was plenty of time. Of course, he was taunting, he didn't respond to that. Then the whole environment, earlier on, it used to be just like Sunday morning, hustle and bustle, great people, just pulling those benches and desks all around. And he counted on the commotion. He escaped not even being scolded on earlier occasions. That was a usual scene. But this time, the teacher, M. Humble, of course, he is in a different attire that he normally used to wear on inspection days or prize distribution days. And then the pin drop silence, the solemn environment, the back benches filled with the elderly people there. No, it was all a surprise package for him. Uh, and then he expected to be scolded. That didn't happen. वो भी नहीं हुआ. उसको उम्मीद थी कि उसको डांटा जाएगा, वो लेट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एम हेमल आज एक चेंज्ड मूड में है. वो डांटने के मूड में नहीं है, क्योंकि आखिरी लेसन वो दे रहा है, तो वो किसी को नाराज करना नहीं चाहता. एंड ही सेड लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, आप जल्दी से जाइए और अपनी सीट पर बैठ जाइए. तो जैसे ही वो सीट पे जाता है, तो फिर उसकी नज़र जैसे ऊपर उठती है, तो ये सब नज़ारा देखता है और वो सोच ही रहा था भी इसका क्या कारण हो सकता है. और इतने में अनाउंसमेंट, एम हेमल, ही मेक्स दैट अनाउंसमेंट, चिल्ड्रन, टुडे इज़ माय लास्ट ऑफिशियल डे एज अ टीचर, because the Prussians, they have passed an order that French is going to be eliminated from the cities of Alsace and Lorraine, and in return of that, in place of that, German is going to be taught. Now that these two announcements, one, it is his last lecture, French goes out, and from tomorrow onwards, the German teacher replaces me. It just came as a thunder shock for him. This is where I ended up my last lecture. I'm sure you must have read this at your homes. Later on, when I complete the chapter, I'll be taking all your queries as well. So this is where I wound up the previous lecture. Now I'm beginning from today's lecture. So please hold your books with you. And again, I'm repeating, please do have a pen or pencil, something that you can put all the meanings on the book itself. Children, I'm again repeating. मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ बच्चों, आपका सिलेबस तो इफेक्टिवली हो ही जाएगा. No problems about that, but I want all of you listening me, they should get adept in learning English as a language, so that you can also share it all with your siblings and your elderly and juniors, your friends, whosoever you meet. The meanings, the spellings, the pronunciation, the Hindi, the English, the antonyms, synonyms. Children, I promise you that when you qualify your grade 12 next year,
and when you want to go for any competitive exam, soon after that, wherever English is required, all the things will be asked. So without putting much pressure on your brain, well, I just request you to do it, learn it, and see how I'm doing with it. Here I go. Uh, so children, just get ready, and this is where I finished yesterday. What a thunderclap these words were to me. It means M. Hammel's announcement that French goes, German comes in, I go, the German teacher comes in. Now this proved as a thunderclap. And now children, you see, there will be a remarkable change in the approach. Even M. Hamel is going to be changed. You will see. Already he has changed. He did not scold him. Okay, he will not buzz his scale also today. He'll be very humble today, very gentle, very quiet. Okay, and of course, very soon you'll find how this announcement brings a sea change. एक बहुत बड़ा चेंज फ्रेंच के अंदर भी आने वाला है. आप देखेंगे. Just here we are, children. My last French lesson. Look at the exclamatory mark. My last French lesson. Why? क्यों? अरे हैरान हो गया बिल्कुल वो. हक्का बक्का रह गया. He was stunned. Why? I hardly knew how to write. मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. No new non children. This is how you can improve your verb formation. V1, V2, V3. This is V2 here. I should never learn anymore. मैंने कुछ सीखा अभी तक नहीं और अब तो सीख भी नहीं पाऊंगा. I must stop here. I must stop then. अब तो मुझे स्टॉप लगना ही है. आगे मैं सीख नहीं पाऊंगा. आज तक अभी तक उसने कोई भी चीज़ सीरियसली ली नहीं थी. ओके, और अब अभी थोड़ी देर में देखें उसका टाइम कैसे पास होता था. हाउ डिड ही वेस्ट हिज टाइम. देन हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स. हाउ सॉरी. कितना अफसोस कर रहा है कि मैं अपने लेसन्स को. रिपेंटेंस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, रिमोर्स, पश्चाताप हो रहा है. देखो, एक सेंटेंस ने बच्चों सारी तस्वीर बदल दी. ओनली वन सेंटेंस चिल्ड्रन, दैट टुडे इज माय लास्ट ऑफिशियल लेक्चर. आई गो, द जर्मन टीचर कम्स टुमारो. एक स्टेटमेंट ने सारी तस्वीर बदल दी. और देखो क्या कह रहा है. And he says, I was not learning my lessons. He never learned. He was never serious. He wasted his time. And now the teacher is going out. He will not be able to learn anymore. And how did he waste his time? Children, remaining away from the school. स्कूल से जब वो दूर रहता था तो टाइम कैसे वेस्ट करता था. बच्चों, आप ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़िए, एक ही चीज़ को सुनिए, क्योंकि मैंने कल बोला आपको कि MCQs आने वाले हैं. 40 marks MCQs आएंगे तो options will be given from here. So if you have a detailed backup, so you can answer any query coming there in those MCQs. So here we are. For seeking birds, this is, children, how he used to waste his time. For seeking birds, eggs are going sliding on the Sar. That is a river valley, children, Sar. This उस river valley जो सार है उसके वो slide करता रहता था और जो birds हैं उनके nest को ढूंढता रहता था. This is how he wasted his time remaining away from the school. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history book, History of Saints, were old friends. Children, look at this change now. अब देखिए क्या change आ गया. I repeat, my books that had seemed such a nuisance. Books that had seemed such a nuisance just a while before, children, and so heavy to carry. Nuisance plus heavy to carry. This is the remark, children. This is the feeling, the belief a little while earlier, and now after the announcement has been made, what he thinks. My books and my history book, History of Saints, were old friends. Such a nuisance, such a heavy, such a burden to carry, and now, children, friends. दोस्ती हो गई. And my History of Saints were old friends. Now that I couldn't give up, और मैं इनको त्याग नहीं सकता, इन बुक्स को छोड़ नहीं सकता. And M. Hamel too. The idea that he was going away, क्योंकि उसको भी है, उसको आखिरी लेक्चर देना है, that I should never see him again, और क्योंकि वो आज आखिरी लेक्चर दे के जा रहे हैं तो उसके बाद मुलाकात होने वाली नहीं है, made me forget all about his ruler and how cranky, children, underline this word, cranky,
ओके, दैट इज सनकी, इसको हिंदी में बोलते हैं सिनिकल. यू कैन ऐड अनदर वर्ड, CYNICL, सिनिकल चिल्ड्रन. दैट इज हाउ ही क्रॉसेस. विम्सिकल, WHIMSISCL, विम्सिकल भी बोल देते हैं, सिनिकल भी बोल देते हैं, और हिंदी में कहो तो उसको सनकी बोलते हैं. तो ही वॉज वेरी क्रॉस, वेरी हार्ड टास्क मास्टर चिल्ड्रन, हार्ड टास्क मास्टर, वेरी स्ट्रिक्ट, of course a little well earlier and now very humble. तो क्रैंकी बोला जाता था, अब थोड़ी देर में उसको पुअर बोला जाता. बेचारा हो गया. एक स्टेटमेंट ने चिल्ड्रन सब कुछ बदल के रख दिया. क्रैंकी से पुअर हो गया. ही वॉज पुअर मैन. लुक एट चिल्ड्रन, पुअर मैन, पुअर मैन. Who is this poor man here? Of course it is Amable. And a little while earlier, who was cranky? Of course Amable was cranky. And now poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब क्योंकि वो आखिरी दिन अपना लेक्चर दे रहा है, और उसके ऑनर में, उसके सम्मान में आज वो संडे क्लोथ्स डाल के आया हुआ है. मिस normally used to wear it, and it's a Sunday morning. It's not Sunday, but it's pin drop silence. That's the reason he's saying Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब समझ में उसको आ रहा है. Now he gets to understand that why those elderly people were sitting at the back of the classroom. It was because they were sorry. अब उनको भी अफसोस हो रहा है. They are also repenting that they had not gone to school more. It was their way of thanking, children, it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. मिस एम हैमिल ने 40 साल की फेथफुल सर्विस दी फ्रांस को, फ्रेंच पढ़ाते हुए. तो ये जितने भी एल्डरली लोग आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, रिटायर्ड लोग आए हैं, ये उसको सम्मान देने के लिए, उसको अलविदा देने के लिए, उसको फेवर देने के लिए, एड्यू वर्ड आता है चिल्ड्रन, ADIEU, उसको देने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो गए. अब उसकी समझ में आ रहा है. It was their way of thanking the master for the 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. Children, there are 3 points here. Why those elderly people have gathered there? One, that they were regretting that why didn't they attend those classes very regularly. They were never students, so they couldn't learn the French language either. Second, it was a glowing tribute, a respect, a mark of honor. Children, regard, homage, tribute, whatever you may call, to Am Hemel for having served the country for 40 years faithfully. And third, that they had come there to show to the respect to the country that they feel there's no more. Because the French language, of course, has been put out, has been abandoned. तो वो लैंग्वेज नहीं रही, तो उनको लगता है वो देश से भी उनको बाहर कर दिया गया, इसलिए वहाँ पे आए हैं. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I have not given be able to say that dreadful rule? Children, dreadful rule. Again, dreadful rules can never be dreadful. Okay, it's the teacher or the person, of course, who is dreadful. Yesterday or last lecture I told you transferred epithet. So dreadful adjective which is not for the rule, but the person who actually implement those rules, it is for that person is referred. Not rule is dreadful, but the person. So transferred epithet, children. Now he was thinking of why these changes have come, why those people have come over there, what for the M. Hamel has worn those Sunday clothes, why this pin drop silence and all that. He was pondering around, thinking about, सोच रहा था गहराई से. अब सोच में क्या हुआ, इसका टर्न आ गया, इसकी बारी आ गई, उसको बुलाया गया कि आप पार्टिसिपेंट्स पे सुनाइए. इट वॉज माई टर्न. वट वुड, अब देखो क्या सोच रहा है, वट वुड है. तो ही विश दैट he was able to recite, he was able to tell all the rules flawlessly. This is what he's thinking. What would I have not given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear. कहते काश मैं पूरा का पूरा चैप्टर पार्टिसिपल का लर्न करके आता और लाउड एंड क्लियर, बहुत क्लियरली टीचर को वो मैं सुना देता. अब उसकी इच्छा है. ओके, विदाउट अ मिस्टेक. बट
I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, you know. कहते ये लाइक चिल्ड्रन, जैसे मैंने डेस्क पकड़ा हुआ है ऐसे ही वो डेस्क को पकड़े हुए, उसका सिर नीचे है, बिल्कुल शर्मा रहा है बहुत ज़्यादा. ओके, ही इज ब्लश्ड. But I got mixed up on the first words and stood there. Stand, stood, stood. Again, children, it's second form. There, children, T-H-E-R-E, yahan wahan, and T-H-E-I-R, unka. Come on, underline this word and put the another one there. That is how you can get these homophones. Holding on to my desk, my heart beating. Heart, children, some of the children pronounce it heart. It's not heart, it's heart. His heart is beating and not daring to look up. उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि ऊपर देख पाए, बिल्कुल रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप है, शर्मा रहा है. ही इज फीलिंग गिल्टी चिल्ड्रन ऑन गेटिंग मिक्सड अप राइट इन फ्रंट. ही विश दैट ही was able to give all that what he could have given back, you know, but that didn't happen. I heard MML say to me, I won't scold you. अब ये तो अपना सब कुछ सोच रहा था कि भाई ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इतना चेंज क्यों आ रहा है. सो हियर ही सेज, आई हर्ड MML से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू. देखो लेट हो गया था तो भी उसको डांटा नहीं गया. अब पार्टिसिपल का चैप्टर नहीं सुनाया तो भी उसको डांटा नहीं जा रहा. लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एनफ. बैड, वर्स, वर्स चिल्ड्रन, दीज आर 3 डिग्रीज. तो कहते मैं आज आपको डांटूंगा नहीं, तेरे को बहुत बुरा लगेगा. सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, बाह बाह, oh, I have plenty of time. I will learn it tomorrow, and now you see where we have come out. Children, in this paragraph, you will find that he blames, he not only blames friends, but he also blames the parents, of course, himself also, for not having imparted the French language properly. And for that matter, they didn't learn it properly. Even he will blame himself that he couldn't give his best also. He had given number of holidays. So here we are, children. See, I have plenty of time. So he expressed deep desire, children. He expressed his deep worry about the human tendency to take things for granted. अब वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि वो सीख लेंगे फिर सीख लेंगे, अरे फ्रांस में तो रहते हैं, फ्रेंच सीखने में कौन सी बड़ी बात है, आज निकल हो जाएगा. सो ही एक्सप्रेस हिज डीप वरी चिल्ड्रन अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. एंड ही सेज हाउ, you know, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace, children. This is the place, Alsace, where he's teaching now. The city which has been captured by the Prussian soldiers, which he has to leave right now. So French language goes from this city, and of course from Lorraine as well, and German comes in place of that. So she means Alsace, children. She here means Alsace. She puts off learning till tomorrow. Children, this is the comment upon the nature of postponing things, thinking there is plenty of time. It is a human tendency. We also feel, even you might have felt sometime, in span of life somewhere, that okay, we'll do it tomorrow, कल कर लेंगे, कल तो कभी आता नहीं है, और कल तक करते फिर सारा समय बीत जाता है और आखिरी में ह्यूज प्रेशर, बर्डन हो जाता है और हम सीख नहीं पाते. इसलिए वो भी इस चीज़ को कह रहा है कि plenty of time, human tendency to postpone the things for the next day. That's one. That's the reason why they couldn't learn this language. Okay, this is the first thing that he blames. Now the second thing he says here, so Alsace, that is the people, she means, I told you it's Alsace, puts off learning till tomorrow. कल कर लेंगे, ये human tendency रहती है. Now those fellows, that means Germans, children, out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen? How is it you pretend to be Frenchmen? Means वो भी ताना मारेंगे, taunt मारेंगे. Hey, you French, and you don't know the French language. Somewhere you can say, sir, you Indians and you don't know Hindi. If that is the case, हमारे पे भी लोग ऐसा कह सकते हैं अगर हम हिंदी नहीं आती है, आप हिंदुस्तानी होकर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, तो ऐसे ही उस पर भी लोग कटाक्ष कसेंगे. जर्मन्स कहेंगे, ए यू फ्रेंच
and you don't know how to speak this particular language. This is what he's saying. Now those fellows, Miss Germans out there, will have the right to say to you, how is it that you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor, neither nor children, it's a conjunction, neither is always followed by nor, neither speak nor write your own language. ना तो अपनी भाषा सीख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, हाँ. But you are not the worst poor little friends. That is the third degree. Bad, worse, worst, children. Bad, worse, worst. This is the second and third degree of bad. Even ill, worse, worst. Bad, worse, worst. Ill, worse, worst. These are the 3 degrees. So, but you are not the worst poor little friends. Poor, adjective, children. We are a great deal to reproach. Reproach means to blame or rebuke. Blame, children, rebuke or censor, censure, censor, मिस ब्लेम करना. हम हमारा भी इसमें बहुत पार्ट है. हमारे को भी ब्लेम किया जाना चाहिए कि हम आपको अच्छे से सिखा नहीं पाए, तुम सीख नहीं पाए, इतना ही काफ़ी नहीं है, हमारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि हम ढंग से आपको सिखा भी नहीं पाए. और वो क्या कह रहे हैं आगे, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपको सिखाने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, वो आपको सिखाना नहीं चाहते थे, तो उनको भी ब्लेम किया जाना चाहिए. दे मिस पेरेंट्स, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म. मिस उन्होंने आपको खेतों में डाल दिया, आप खेतों में जाके काम करिए, पैसा कमाइए. ओके, उनका जो एक एटीट्यूड रहता है, अप्रोच रहता है, वो कहता है कि जितने ज़्यादा बच्चे हैं उतने ज़्यादा उनको कमाई होगी. उनको ये नहीं पता कि जितने ज़्यादा बच्चे उतने हैंड्स अनऑक्यूपाइड हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. बट क्योंकि वो पढ़े लिखी कम्युनिटी से नहीं होता, उनको समझ इतनी होती नहीं है, तो बच्चे तो हैं लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं उनको भेजा जाता, और उनको खेत खलिहानों में भेजा जाता है, कारखानों में भेज दिया जाता है कि आप जाके वहाँ पे काम करिए. तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, उनकी भी जिम्मेवारी थी, इसलिए उनको भी ब्लेम करना चाहिए. ओके, तो दे प्रेफर्ड यू टू पुट ऑन फार्म, दैट इज खेतों में, एट द मिल्स, कारखानों में, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी. एंड थर्ड, एंड मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो चिल्ड्रन, मेरे को भी ब्लेम किया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स, हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने आपको अक्सर अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? क्या भेजा था ना. दैट इज़ व्हाट इज सेइंग. इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, आपको लेसन्स लर्न करने की बजाय आपको पानी देने के लिए मैं भेज दिया करता था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे. और हाँ, जब मेरे को कभी फिशिंग के लिए जाना होता था तो क्या मैं आपको छुट्टी नहीं देता था? तो जब भी फ्लास्क को पानी देना होता था तो मैं आपको लगा देता था पढ़ाई की बजाय. जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं आपको छुट्टी देता था. पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए विवश नहीं करते थे, आपको स्कूल में भेजते नहीं थे, कारखानों में, खेतों में, खलिहानों में भेज देते थे कमाने के लिए. और तीसरी बात उसने जो बोला, द नेचर ऑफ पोस्टपोनमेंट, टुमारो विल डू, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो नेवर कम्स. कल कभी आता नहीं है. हम रोज़ इस टेंडेंसी को लेकर चलते हैं, लेकिन कल कभी आता नहीं है, और आखिरी में पश्चाताप होता है जब बहुत सारा काम हिप हॉप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और हम कर नहीं पाते. दिस इज, सो दीज आर द 3 persons or the things that he actually blames for not having been able to impart French language, or that they were not able to learn. I'm sure children, you're getting all what I'm bringing to you. Then now children, how he inflicts lot of praises on the French language. French language पे किस तरीके से वो अपनी praise, अपनी प्रशंसा करता है. देखो क्या कह रहा है. Children listen. Then THEN children, तब, time, and THAN, that is when you have second degree use. She is taller than him. Then that is used here. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language. Children, this particular passage, the question, earlier on children, now the question is expected, of course, for the first term that you're going to take is all MCQs. But even the second MCQ or second term exams which you'll be taking maybe possibly in February or March next year. So that will be of 40 marks, 10 marks will be of assessment, ASL and final, all that.
So there also, maximum 5 marks question is expected, if at all that comes, But a few years earlier on, children, when the question was of 10 marks, from this particular paragraph, at least 3 times the board has set the question from here, that how does he pay compliment to the French language? Okay, how does he pay his homage, his tribute to the French language? And the answer comes here in this paragraph. Children, here you are. What does he say? It was most beautiful language in the world. Most, children, third degree is using most beautiful language in the world, one, the clearest, second, and the most logical, three. The most beautiful language, the clearest, and the most logical, and that we must guard it among us and never forget it. और हमें इसको कभी भूलना नहीं है, इसको गार्ड करके रखना है. You have to guard it, GUARD, इसको protection देनी है. Because when people are enslaved, people are enslaved as long as they hold fast to their language, means as long as they retain it firmly. जब तक वो मजबूती से अपनी लैंग्वेज को पकड़े रहते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, it is as if they had the key. Had is second form, children, past indefinite tense. As it is if they had the key to their prison, मीन्स फ्रीडम का एक ही रास्ता बचता है, और वो है अपनी लैंग्वेज को बचा कर रखो, उसको होल्ड रखो. ठीक है, आज का दिन नहीं है तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, पहले वाले दिन नहीं है तो आज के दिन भी रहेंगे. तो यू जस्ट होल्ड दिस लैंग्वेज एंड ही शावर्स praises on this, language, the most beautiful, the clearest, the most logical. Kindly hold it. It is key to your prison. It is key to your prison. And then he opened a grammar and read us a lesson. I was amazed to see how well I understood. इतने सालों से वो समझ नहीं पाया, और आज थोड़ा सा जो लेक्चर उसने दिया थोड़े से टाइम में, उसको सब समझ में आ रहा है. The only thing was the approach, the attitude, the intention that now he had shown. Children, this is also on you. If at all you haven't done much there in English, here you are. Just pay attention to what I'm bringing to you, and all these coming days, I'm sure that you'll be able to do the entire syllabus of grade 12 properly. I just assure you. Just you have to pay a little bit of intent that is required from you. Similarly, as is being shown here by friends. अब फ्रेंड्स देखिए, पहले स्कूल में आता नहीं था, आता था तो अटेंटिव नहीं रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था. आज सब कुछ समझ में आ गया, और टीचर का भी इंटेंट बहुत ज़्यादा देखो. ही वॉज नॉट स्कोल्डिंग, ही वॉज नॉट यूजिंग हिज रूलर, okay, and he was giving all what he had, okay. So I was amazed to see how well I understood. All he said seemed so easy, so easy. Oh my dear, so easy, so easy. Repetition. He's emphasizing so easy, so easy. हाय, इतना आसान, इतना आसान. एक लेक्चर आज उसको देखो, सब समझ में आ रहा है. The only thing, children, again is intent. Just give all you have. Here is, you'll get it everything you want to have. And I think too that I had never listened so carefully. और फिर वही भी कह रहा है कि आज तक मैंने भी कभी इतना ध्यान से सुना नहीं था. And that he had never explained everything with so much patience. और शायद उसने भी कभी इतना पेशेंस से, इतना धैर्य से कभी उसने आज तक सुनाया नहीं था, आजकल पढ़ाया नहीं था. वो क्रॉस रहता था, उसको हार्ड टास्क मास्टर बोला जाता था. ओके, टुडे his voice had mellowed actually. He was very grave. I'm talking about M. Hamel, children. He was grave. That means he was very serious. He was gentle. He was patient. Okay, he was not rapping his ruler like this. He was not rapping on the table. And he had taken the trouble to dress up in the best attire today. Even he was changed, children. So it seemed almost as if the poor man, from cranky now today's poor man wanted to give all us he knew, known, children, before going away, and to put it away. Children, put all three forms, it all in our heads at one stroke. At means single action in a single moment. आज एक एक्शन में, एक मोमेंट में, जो आज तक उसने भी इतना इंटेंसली नहीं दिया, आज वो सब हमें देना चाहता है. तो वो भी आज बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, और उसकी वॉइस में मेलोनेस है, जेंटलनेस है, पेशेंस है, धैर्य है, देखो. और ये भी कह रहा है कि मैंने शायद इतना कभी आसानी से या इतना धैर्य से मैंने पढ़ा नहीं,
और उसने कभी इतना पढ़ाया नहीं. सब समझ में आ रहा है बेटा, सब समझ में आ रहा है. After the grammar we had again his children second form. That day M. Hamel had new copies for us. नई नई कॉपियाँ देखो हैंड रिटन लेके आया है. इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस. देखो सब चीज़ें पेट्रोटिक लगने वाली हैं. वो पेपर्स कुछ लेके आया हुआ, उस पर फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ है. दे मीन्स जो फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ है कैसे लग रहा है? दे लुक लाइक चिल्ड्रन, लाइक और एज सिमिली, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच. लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम hung from the road at the top of a desk. मीन्स जैसे एक डेस्क है उसके ऊपर एक रोड लगा दी जाती है, उस पर फ्लैग्स लगते हैं, तो चारों तरफ ऐसे लग रहा है जैसे फ्लैग्स ही फ्लैग्स है. पैट्रियोटिक फीलिंग्स आ चुकी हैं. इमोशनल तो है ही है सारा सीन, पैट्रोटिज्म अच्छा आ गया. देखो सब कुछ फ्रांस एल्सेस फ्रांस, सब कुछ पैट्रोटिक लग रहा है. और जैसे लग रहा है जैसे डेस्क के ऊपर वो झंडे ऐसे लगा दिए गए हों, ऐसे लग रहा है. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. आप देख सकते थे कि सारे के सारे छोटे बड़े सब काम में लीन हैं, मस्त हैं. एंड हाउ क्वाइट इट वाज, बिल्कुल शांति है, चुपचाप है. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन. चिल्ड्रन, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, व्हेन यू हैव पेन यू कीप स्क्रैचिंग ऑन द टेबल और द डेस्क, तो उसकी कुछ आवाज़ आती है. सिर्फ यही आवाज़ आ रही है. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. वंस सम बीटल्स, कुछ परिंदे होते हैं, छोटे छोटे बीटल्स होते हैं, ओके, वो कुछ उड़कर आ गए. वंस सम बीटल्स फ्लू फ्लोन बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम. मिस कुछ बीटल्स, कुछ इंसेक्ट्स थे छोटे छोटे, वो उड़कर आ गए तो भू भू कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. इतना फोकस्ड है. ओके चिल्ड्रन, इट इज सेम केस व्हेन यू हैव द फेयरवेल्स एट योर schools, or whole during the year we have some kind of reservations about some teachers. Some teachers have some reservations at some point of the time, maybe here and there. Some students are there against that, but then on the day of farewell I think you can see some teachers emotionally getting down and crying, even the children also. Everything is forgotten. So same here children, last day, young children, elderly people, all are quiet today. And you see how quiet it is. Everything is understood. Everybody is busy doing their work, Last lesson. This is the chapter, children, we are doing. And the beetles just flew. Nobody paid attention to that. Not even the littlest, छोटे से छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे बीटल्स की तरफ. देखो अक्सर ऐसा होता नहीं है. अगर क्लास इंटरेस्टेड नहीं हो तो बाहर बहुत ध्यान दिया जाता है. थोड़ा सा मूवमेंट हो, अगर क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अगर बच्चों क्लास में टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है तो आप बाहर देखते हो, बैल जाने का इंतज़ार करते हो, थोड़ी सी मूवमेंट भी होती है तो उधर ध्यान जाता है. इज इट? या. सो एवरीबडी इज़ वेरी कीन, just focusing on everything that is being said. Of course, M. Hamel is just sitting there, witnessing, watching, observing, and the young children, the elderly one, everybody is just busy, just there because of the keenness, the intent is there. और कई बार ऐसा बच्चों स्कूल में ऐसा होता है कि जब टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत नॉलेज आपको गेन हो रही है, उसमें बड़ा मज़ा आता है टीचर्स को सुनने में, तो टाइम का कभी पता नहीं लगता, पास कैसे हो जाता है, और बाहर का मूवमेंट कुछ भी होता रहे आपको पता नहीं लगता. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर आ जाता है, थोड़ा सा टीचर में वो इंटेंट नहीं रहता, आप थोड़ा बोर होते हो, तो फिर छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हैं बाहर वो भी पता लगती हैं और आप घड़ी की तरफ देखने लग जाते हो कि कब बेल हो और कब ना हो. लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे भी, बीटल्स उधर से आ रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स आ रहे हैं, वो बज कर रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं है. सो नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, दे डिड नॉट पे एनी टेंशन, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक. तो वो जो फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ है फ्लैग्स की तरह, उसके ऊपर वो अपनी पेंसिल चला रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तो सब कुछ पेट्रियोटिक है. एज इफ़ दैट वाज चिल्ड्रन, एज इफ़ यहाँ पे वर होना चाहिए था, बिकॉज एज इफ़ एज दो जहाँ भी आएंगे वहाँ पे वर लगना चाहिए. इट शुड बी वर, एज इफ़ दैट वर फ्रेंच टू. ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ उस फिश हुक्स में भी, जो कि वो फ्लैग्स लग रहे हैं, उनको भी लग रहा है जैसे इसमें भी पेट्रोटिज्म है, इसमें भी फ्रेंच है. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. और रूफ, छत पे कुछ पिजन्स आ गए और उन्होंने अपनी आवाज़ शुरू की, कूइंग. एंड आई थॉट
Friend says, I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeon children? This is the line which was given in the board two times. It has been given by the board itself two times. Will they, that means those Germans, make them, that means those pigeons on the roof, sing in German, even the pigeons? That means, are they going to wipe this French language from France completely? This is the nutshell meaning of that, कि क्या वो फ्रेंच लैंग्वेज को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाले हैं. But then he says, of course, not only they have snatched the territory of Lorraine, Alsace, the present city where they are. Miss Alsace और Lorraine पे तो कब्जा कर ही लिया है, but they are also trying to conquer the minds and the hearts of the people, which France says that they will never be able to do that, as it is impossible, to teach these pigeons German language, so it is impossible for those Prussians to conquer our minds and hearts. वो कभी ये हमारे दिलों पे कभी राज नहीं कर पाएंगे. This is a satirical statement. This is a taunting way saying that are they going to wipe this language completely from our territory. So children, this is all that I have to say as far as today is concerned. I'm sure I was able to bring whatever I could bring it to you. I'm sure you must have understood. So this is where I finish this, and next time when I meet you, kindly put a revision there at least for 10 minutes, and when I give you an opportunity of questioning me, you're able to do that. Yeah, children, today's lecture I started with that statement that was made by M. Hamel, that today is my last lecture, and that proved out to be a thunderclap as far as Friends was concerned. This is where I started, please mark that. And I wind up my lecture where the statement is made by Friends. What he says, when the pigeons started going on the roof, he made a statement, will they make them sing in German, even the pigeons children? This is page number 7. You can mark it down there. And when I start my next lecture tomorrow, I will start from whenever I looked, page number 7. This is where I wind him. Jai Hind, Vande Mataram.